Good morning, students. Today I am going to continue chapter number 2, solution part 3. So, the topic is colligative properties. Colligative properties are the properties of dilute solutions which depend on the number of solute particles, not on the nature of solute particles. ये वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करती हैं, उसके नेचर सॉल्यूट के नेचर पर डिपेंड नहीं करती हैं. एंड सच प्रॉपर्टीज़ आर, फर्स्ट इज relative lowering in vapor pressure, and the relative lowering because when the non volatile solute is added to form a solution, जब हम एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं सॉल्यूशन बनाने के लिए, द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन डिक्रीजेज इन कंपैरिजन टू द प्योर सॉल्वेंट. तो सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट प्रेजेंट होता है उसका वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट से कम हो जाता है. दिस इज़ कॉल्ड द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. इसको हम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं. एंड दिस कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फॉर्मूला PA नॉट माइनस PA अपॉन PA नॉट equal to XB. It means the PA naught is the vapor pressure of pure solvent and PA is the vapor pressure of the solvent in solution, and XB is the mole fraction of solute. And if we put the value of the XB in this equation, then we are able to calculate the we are able to calculate the molar mass of the solute also. And thus, according to the Raoult's law, the relative lowering of vapor pressure of solution is equal to the mole fraction of the solute. Next colligative property is the elevation in boiling point, and it is denoted by TB. TB, and it is for the dilute solution that delta TB, it is the increase in boiling point, because when we add a non-volatile solute in the solution, then the vapor pressure decreases, and this increases the boiling point of the solvent in solution. So delta TB is directly proportional to molality M, or delta TB is equal to KB into M, and KB, it is called the ebuloscopic constant or molar elevation constant. And in this formula also we can put the value of M and to find out the molar mass of the solute, and KB, it is the ebuloscopic constant, and it is the elevation in boiling point of 1M solution. Next, the depression in freezing point, and it is denoted by delta TF. It is proportional to the molality of the solution. So delta TF is proportional to M, or delta TF equal to KF into M. KF is known as the freezing point depression constant or क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट. इसको हम क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट या फिर मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट भी कहते हैं. द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज ऑस्मोसिस.
It is the spontaneous flow of the solvent molecules from a dilute solution into a concentrated solution when the two are separated by a semi permeable membrane, and it is known as osmosis. ऑस्मोसिस वो प्रोसेस होता है जिसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू जो डाइल्यूट सॉल्यूशन है वहाँ से सॉल्वेंट पार्टिकल कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन की साइड में फ्लो करते हैं. एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, it is denoted by pi, and it is the pressure which stop the flow of process of osmosis. The excess pressure which just stop the process of osmosis is known as osmotic pressure, and it is denoted by pi, and mathematically pi equal to CRT, or it is equal to NB upon VRT. N is the osmotic pressure, pi is the osmotic pressure of the solution, NB is the moles of solute, V is the volume of solution, and C is the concentration of solution, V is volume of solution in liters, R is gas constant, and T is the temperature on the Kelvin scale. Now the next topic is isotonic solutions. The solutions which have same osmotic pressure, they are known as isotonic solution. They have same molar concentrations. आइसोटोनिक सॉल्यूशन वो होते हैं जिनका की ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल होता है. नाउ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपो मीन्स द सॉल्यूशन whose osmotic pressure is less than the other solution. It is known as hypotonic solution. Hypertonic solution, the solution whose osmotic pressure is higher than the other solution, that is called the hypertonic solution. Now the next thing is Wonsoff factor. It is denoted by small I and is used to express the extent of association or dissociation of solutes in solution. तो वॉन्टॉफ फैक्टर जो होता है, बिकॉज देयर आर 3 टाइप ऑफ सॉल्यूट्स, 3 तरह के सॉल्यूट होते हैं. द आयनिक सॉल्यूट्स जो होते हैं जैसे सोडियम क्लोराइड, इट डिसोशिएट इनटू द सॉल्यूशन इन द आइंस. तो द आइंस में जब डिसोशिएट हो जाता है कोई भी सॉल्यूट तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज हो जाती हैं. एंड सम सॉल्यूट्स दे नाइदर डिसोशिएट नॉर एसोशिएट, ना वो डिसोशिएट होते हैं ना ही एसोशिएट होते हैं, लाइक ग्लूकोज, सुक्रोज, ये. एंड थर्ड वन इज द सॉल्यूट्स विच एसोशिएट. एसोशिएट का मतलब होता है दे कंबाइन टुगेदर. फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ द एसिडिक एसिड और इथेनॉइक एसिड, the molecules are associated, they form the dimer बना लेते हैं. यानी कि in the solution phase the 2 molecules of the ethanoic acid becomes 1 molecule. इसमें क्या होता है, एसोसिएशन हो जाता है. तो ड्यू टू एसोसिएशन और डिसोसिएशन द number of particles in the solution decreases or increases, and it is the ratio of the normal and observed molar masses of the solute. So I equal to normal molar mass upon observed molar mass, or it may be equal to calculated molar mass upon experimental molar mass.
In case of association, observed molar mass being more than the normal, the factor I has the value less than 1. But in case of dissociation, the won't have factor is more than 1 because the observed molar mass has a less value. In case of the solute which do not undergo any association or dissociation in a solvent, the want of factor I will be equal to 1. जिसमें ना ही डिसोसिएशन ना एसोसिएशन होता है, ऐसे सॉल्यूट्स में जो want of फैक्टर की वैल्यू होती है वो 1 के इक्वल होती है, बिकॉज द ऑब्जर्व्ड एंड नॉर्मल मोलर मासेस विल बी द सेम. Now, inclusion of the wants of factor I modifies the equation for the colligative properties as follows. जब हम want of factor को भी इंक्लूड करते हैं तो जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं उनके फॉर्मूले मॉडिफाई हो जाते हैं, लाइक दिस, दैट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आई kbm, and similarly depression in freezing point delta tf equal to small I kfm, and osmotic pressure pi equal to I crt. It is enough for today, and please subscribe the channel. Thank you students for watching video.